Maya ma'am, very good afternoon to you. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, very good to see you, ma'am. Nice to see you all also. Thank you. Ma'am, can we start the session? Please, please, no problems. Okay. So Dr. Shumaila will introduce. Over to Dr. Shumaila. Good afternoon to everyone present here. I, Dr. Shumaila, welcome you all to the third day of the Professional Development Program on Outcome-Based Education, an initiative of BSSS, Internal Quality Assurance Cell. The topic for today's session is how to prepare question papers in outcome-based education. Our esteemed resource person for the session, Dr. Maya Ingle. Ma'am doesn't actually need any introduction to the BSS family. Ma'am is family for us. So, but ma'am has an experience of over 34 years in the technical and administrative fields. And talking about her professional qualifications, ma'am is a gold medalist, MSc Statistics from Devi Ahilyabai University, Indore. Then ma'am did her MTech from IIT Kharagpur and PhD in computer science. Talking about ma'am's current positions, ma'am is a senior faculty at the School of Computer Science and Information Technology, DAVV, Indore. Presently, she's also working as the director, Deen Dayal Upadhyay Kaushal Kendra at DAVV, Indore. Ma'am has also worked from 2006 to 2009 as the Dean Student Welfare at DAVV, Indore. She's also served as the Nodal Person, Model Career Center in the Ministry of Labour and Employment, Government of India at DAVV Indore. She has had 18 research scholars who have already been awarded their PhDs and 7 are currently pursuing their PhD under her. It's a delight to have you amongst us, ma'am. So without much ado, I would like to hand over the mic to you, ma'am. Over to you. Thank you so much. Thank you so much. I am very happy to be associated with you for this reason again. Otherwise, as I said, that I am like a family member for all of you also. So basically, when I got to know that this is a workshop and it was 3 days workshop, 2 days have been completed by you, and I could see that you completed Bloom's taxonomy and outcome-based education. So whatever has been covered, I have already seen because Shiba has sent me. And just in morning itself, I went through all these things. So I am really very happy that many of the keywords which have been key components, which have been covered by my earlier speaker. So I need not continue or I need not cover those things. But everybody has his own ways, basically his or her own ways to explain the things. And therefore, I would like to present some things which are really very, very important as far as the assessment through question paper is concerned. So definitely I would like to, is it visible? My screen? No, ma'am, it's not visible. Okay. Entire screen, yes, now it will be visible. Allow. Is it visible now? Yes, ma'am. Yes. Yeah. So let me share my slides with you, and more or less it will be covering the topic which have been assigned to me basically. So let me start with it. Basically, I have written here assessment strategy using OBE framework.
More or less, you have already covered this OBE framework, but still, I said that I would like to cover some of the conceptual things, components basically here. Assessment strategy, basically, it is assessment through the question paper. So whenever we try to design the question paper, what is the basic purpose? We need to understand the knowledge level which has been attained by the students. So everybody knows that there are indirect ways and direct ways. So if it is a kind of examination, uh, so this mode basically is the direct assessment. So again, if you have to assess the level of the student, so what are these levels? So basically the Bloom's taxonomy is there for that reason. And again, so direct model is nothing but the question paper. So this model is nothing but I mean, this is through question paper setting. So it is basically for that reason I have written here the general word assessment strategy. So essentially we are going to improve the academic quality of examinations through the question paper setting. So main aim is listed here, but since I am going to cover some components also, so it has been generalized because of that reason. So let me talk about adaptation of OBE framework first. I know that you have already started adapting OBE, but why this OBE has come up, everybody should know, and probably you might be knowing. But in short, I would be interested to say that our India became the member of Washington Accord, and there is a history behind it. So I would not like to cover this, but yes, next time whenever I will visit you people in person, I would like to tell you about all those things. Otherwise, हमारा ये time भी हमको बहुत कम पड़ेगा. So basically, Washington Accord is the kind of agency, international agency. I mean, not agency. It is a group which basically is looking at the quality of the education systems. So India has signed in Washington Accord basically for the engineering education, and fully this OBE has to be implemented in each and every engineering colleges. It has become compulsory, and therefore this OBE, this is always given, or this framework is always at least we people, we got to know from NBA, National Board of Accreditation. And then after so many visits, we also had taken the responsibility to, impart the knowledge of this OBE to each and everybody. And now AICT and UGC, both of them has again, both of them have made compulsory to adapt OBE. So basically, this adaptation of OBE is there initially from NBA in our India, and gradually then AICT is also asking all of the institutions to adapt it, and UGC has started. Because NEP, you'll have to adapt this framework. This is what is written there also. So focus is limited to curriculum design part, that is connecting components to POs. I'm really very happy to note that what are POs, program outcomes and all those things have been already covered in these 2 days. And therefore, I am going to touch some of the examples related to this, but not going into the details. Little attention is being given on connecting examination questions or assessment tools on POs. So here I would like to say that whenever we talk about adaptation of OBE framework, so many of the experts, they might be talking about the meaning of POs. There are certain indicators related to POs. What are they? How do you generate? And all those things. But if you talk about POs and its connection with examination question paper or assessment, so it is slightly missing, or little attention is given on this. And therefore, probably your IQAC has basically organized this workshop. So improper mapping between POs and assessment tools lead to
accurate and unreliable measurements of attainment of outcomes by the students. Yes, it is very much true. As we visit so many institutions as far as NBA is concerned, so we come across this situation many a times. If the stakeholders are not very much properly aware of these key components of OBE, so our whole whole work or hard work, I should say, it gets into dustbin. And this is what is because of improper understanding of the key components of OBE, and many kinds of mappings are also required between those components. So जहाँ improper mapping हुआ, सब गड़बड़ काम हुआ, और उनके outputs भी जो हमारा main काम है attainment of outcomes, वो भी गड़बड़ होता है. So importance of higher order abilities and professional skills. So basically when we look at the examination paper setting, so it is very much essential for us to understand what do you mean by higher order abilities, what do you mean by professional skills, how they are different. So I have tried some slides for this reason. So in traditional or present examination system, memorization is dominant. Forget about the abilities which you have been taught within these 2 days. But in general, look at the examination system which has been conducted by some university, and the affiliated colleges, students are entering into this examination system. So normally it has been seen that memorization is always dominant. और इसीलिए हम बोलते हैं मगअप करो और लिख दो, बस अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है उसका कोई रोल नहीं है. So this is reality. Several major abilities are looked off by graduate. यही जो अभी बताया. See how much really the concept has been understood by the students. Why it is going to happen? There is a gap between the requirement and the graduates which are produced in thousands. Because the requirements by the industry, they want to have they expect certain abilities, and those abilities are not found in most of the graduates. So this is the basic reason behind it. Assessment process must test higher level skills such as ability to apply knowledge, solve complex problems, analyze, synthesize, design, and so many other things. Now I'll come to all those things later, but it is in general, and therefore I would like to go ahead with this pattern only. Also, professional skills for employability of graduates, such as ability to communicate, work in a team, lifelong learning. These are to be now. This is a proper time to look at all these abilities in our graduates also while studying at our own college or institution. Appropriate weightage should be given to these competencies in the examination. We were never thinking earlier that if the questions are, these questions are floated in our own examination system in this pattern, how or which kind of abilities or skills will be, taken care by the teachers as far as the students is concerned. We never thought of earlier all those things, but OBE framework, we have to look from that point of view. These challenges may be achieved by adopting worldwide best practices in the assessment. See, I said that Washington Accord में India ने sign किया है. So we also, being the growing country, this is really a very, very, बड़ा गर्व लगता है हमें भी कि हम लोग भी इंडिया भी जो है worldwide best practices को जो है वो समझ के और adopt कर रहा है, adapt भी कर रहा है. So program outcomes. Everybody knows what is the meaning of program outcome. Should I continue this or simply I should skip, Shiba? Ma'am, kindly continue, ma'am. Okay. So program outcomes. See, there are two things which are very, very important to understand at the initial stage. First is program, another is course. Normally, people make use of these two and they exchange it. They are not same.
Program and course. Basically, the subjects which we teach, they are the courses. And the program, that is our UG or PG program. So MSc in specified domain. MCA, BA with some specific domain. These are all programs. Whereas the subjects which are taught within these programs are nothing but the courses. So POs, outcomes related to the programs, are POs. So they are at higher level as compared to the COs, course outcomes. So सबसे पहले तो ये बात हम दिमाग में हमें रखना है. So POs, they describe what students should know and be able to do at the end of the program. Suppose we run BA program, BA in a specific domain, let us say in specific area. So you have divided this degree into 3 years in gradual manner. So at the end of the program, what is there in your mind that student, the graduates, should be able to achieve this kind of level? This kind of outcome is expected after 3 years. So this is the program outcome. It is related to program. They are to be in line with graduate attributes of NBA. National Board of Accreditation, basically, it covers some of the sectors of the education domains. So like it covers engineering domain, it covers architecture domain, it covers pharmacy domain, it covers some specific parts of civil engineering, it covers hotel management and so on. Management also, management, MBA degree also. So it covers all of these programs. So these programs, for these programs, they have listed basically the graduate attributes. So they are the standard ones. So GAs, we say graduate attributes as GAs. But there is the flexibility that institution, if wishes, the institution may combine one or two or three graduate attributes in a single attribute. And instead of 12 attributes, there may be some lower number of attributes also. But many of the institutions, they consider that they have the whole set of 12 attributes as the graduate attributes because they have been defined by NBA in a standard manner. So POs may be the set of all 12 attributes, or it may be, squeezed into some of the POs basically. So POs, basically this graduate attribute and POs are same, but since अभी मैंने बताया कि 12 में से यदि 4 या 5 ही POs कंसीडर करते हैं तो इसलिए उसका कुछ अलग से नाम होना चाहिए और इसलिए हम लोग POs यानी it will be a subset of this graduate attribute ऐसा मानते हैं. So POs are to be specific, they are measurable and they are achievable. ये ध्यान में रखना है और होता है ऐसा. So POs transform PEOs into specific student performance and behaviors that demonstrate student learning and skill development. मैंने आज आपकी स्लाइड्स देखी, उसमें आपका एक बहुत ही अच्छा डायग्राम मैंने देखा. इट वाज रियली फैंटास्टिक. मैंने देखा है कि स्पीकर ने जो आपको स्लाइड्स दिए उसमें ओबीई जहां समझा रहे हैं वहां एक साथ में COs, POs, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट और PEOs भी बताया है. एक कौन है जो लेटा हुआ है और उससे जो है ये बताया हुआ है. सो इफ ये मेरे को दिख रहा है यहाँ ये वाला, ये जो है ये इससे टिल्टेड कोन से बताया हुआ है. सो बेसिकली PEO प्रोग्राम एजुकेशनल आउटकम. सो ये जो है ये और हायर लेवल का हो गया जिससे हम लोग विजन जो है वो कंप्यूट करते हैं, विजन की ओर बढ़ते हैं. PO से हायर लेवल. So many programs are there in a college. So those many POs will be there. Those many POs will be there for specific program. This is the thing. Whereas PEOs may be combined. I mean, it will be a combined effect of all of the POs. Generalized.
जनरलाइज्ड वन. सो POs and PEOs दोनों में इसलिए डिफरेंट है. POs are at the program level and these POs may be combined together and written in a general manner which will be very close to the outcomes for the vision computation or vision attainment basically. So this is the basic difference. PEOs. Then broadly, POs are knowledge and skill sets that the graduates have at the time of graduation. So what you are expecting that a graduate should possess a typical kind of skill set along with some level of knowledge. So these kind of things are stated by POs. So many examples have been cited here. This example is the example of one institution, I don't remember, but एक किसी institution का ये मैंने set of POs यहाँ लिखा हुआ है. So there are 6 POs. See, number is not always, I said कि number का कोई चीज में नहीं रहता है, but हाँ जो graduate attributes है वो करीब करीब जितनी भी skill sets होती है वो सभी को cover करता है. And 12 graduate attributes are there basically. तो उसमें से यदि आप कुछ को क्लब कर लेते जहां यहाँ किया हुआ है और इसलिए इन्होंने POs जो हैं वो 6 यहाँ बना के रखे हैं. So this is first example. नहीं 6 क्या ये पूरे 12 है. I'm sorry. These are the graduate attributes. ये sorry ये जो है ना ये example 1 ये graduate attributes है पूरे 12 लेके रखे हमने और ये NBA ने दिए हुए हैं. ये NBA ने दिए हुए हैं एज अ स्टैंडर्ड्स कि ये 12 है. अब इस 12 में से जरूरी नहीं है. अब ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया किसी कॉलेज का यहाँ लिया है बट ये एग्जाम्पल 1 कॉलेजेस पूरे 12 के 12 भी लेते हैं. प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड. सो ये 12 भी लिए होंगे उन्होंने ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स और इसीलिए मैंने एज एन एग्जाम्पल लिखा हुआ है. बट लेट अस लुक एट हियर द एग्जाम्पल 2 वेयर PO1 to PO9 are listed as the example. Then come to the another very important key component of OBE as course outcomes. Course are nothing but the subjects. So COs are clear statements of what a student should be able to demonstrate upon completion of a course. Suppose I am teaching a programming kind of, let us say, programming kind of subject. Let us say it is the introduction to C++. This is my course title. So there may be one more course which is advanced. So for that the prerequisite will be the introductory course. So whatever by the course outcomes are there in the first course, that will not match with the higher level wala course because the contents will be definitely at higher level. And therefore, if you look at these two courses, if they are managed in first year and second year, until graduate level, you may have this thing that there should be the proficiency in C++ somewhere or any language, let us say. So all these things are very well connected with each other. So at program level, PO level, you might be having some PO that there must be the proficiency in at least one of the languages. So it may be because of these kind of courses only. और इसीलिए हम लोग prerequisites की बात करते हैं. I know that you people are also trying to go for listing out the prerequisites for the various subjects. So they should be accessible, measurable knowledge skills, abilities or attitudes that the students attain by the end of the course. तो ये सब्जेक्ट की बात है. हर सब्जेक्ट में हम लोग COs लिखते हैं and we try to understand the levels of COs also. Levels means 1, 2, 3, 4 something like this. But here I am not going to talk about the depth level also or even the intensity level also. So it is simple कि एक कोर्स पढ़ाने के बाद क्या क्या आउटकम्स जो हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस स्टूडेंट से. So those are nothing but the COs. It is generally a good idea to identify between 4 and 7. I should not write this. तो ठीक है, ये इसकी हम अभी बात नहीं करते हैं. So all courses in a particular program
would have their own course outcomes. ये होता है. You also have such kind of list with your courses. These course outcomes are designed based on the requirement of the program outcomes. इसीलिए मैंने बोला कि connection होता है. COs और POs का आपस में connection होता है. Broadly, whenever you define POs, that is after completion of a particular degree, let us say BA degree. So what a student is expected to gain. So depending upon that, you define, you try to organize the courses at various levels and define their outcomes, COs also. And therefore, these course outcomes are designed based on the requirement of program outcomes. It means इन लोगों में connections भी आपस में होते हैं, और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा COPO मैपिंग. COPO मैपिंग यदि irrelevant होते, यदि कोई independent होते, यदि independent होते तो उसमें मैपिंग का कोई मतलब ही नहीं होता. Each course outcomes are mapped to a relevant PO and they are mapped to POs, program educational objectives. So हम levels की बात करें तो सबसे पहले COs, then बीच में POs and then PEOs, program educational objectives. So program educational objective means हमारे कॉलेज का जो एक एनवायरनमेंट है, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, और जो हम एक बोलते हैं इसेंस है, तो उस इसेंस से हम लोग ये PEOs, जिसमें सारे कोर्सेज के POs का भी पूरा निचोड़ आ जाए, those are PEOs. So मेरे ख्याल से शिवा थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको सभी लोगों को. Yes, yes. Thank you. So am I clear? Yes, yes. So should I proceed in this pace only? Sure, ma'am. Kindly proceed. थोड़ा repetitions होंगे आपके लिए, पर मैंने बताया ना कि हर किसी का अपना तरीका होता है समझाने का. हाँ. Actually, so COs, हाँ, yeah. नहीं मैम, अगर repeat करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा ना. ठीक. So that is really good. Thank you. Okay. Teaching, learning process and assessment methods are to be designed in such a way to achieve COs. See, again, there are certain methods and processes which have been associated with COs. ये भी आ गया एक नया पॉइंट अभी कि असेसमेंट मेथड्स भी होती है, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, वो ऐसी होनी चाहिए कि COs को वो सपोर्ट करना चाहिए. It is important to ensure that the student is able to acquire knowledge or skill that is badly required at a particular level of their course program basically. So COs are knowledge and skills that are attained by the graduates in a course, could be a part of PO. इसीलिए मैंने बोला कि CO और PO एक दूसरे से जुड़े हुए भी रहते हैं, and therefore COs are mapped onto POs, जिसको हम बोलते हैं CO-PO matrix. Let me go for certain examples of CO. Suppose I say, see, I am from computer science background. मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं, and it is but natural, मेरे लिए वो ज़्यादा easy भी होता है. मेरे पास समय होता तो आप लोगों की वेबसाइट से मैं कुछ प्रोग्राम्स भी निकाल लेती. उस प्रोग्राम में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो वो भी निकाल सकती थी, बट फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत मुश्किल था मेरे लिए अभी टाइम निकालना. पर मैंने कैसे वैसे मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ कि आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगी, और जो हमारा मकसद है उसको पूरा करूंगी. पर मुझे एग्जाम्पल्स के लिए इतना सच में टाइम नहीं मिला, तो मेरे जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उससे मैंने आप लोगों को समझाने की यहाँ कोशिश की है. सो जिसको नहीं समझ में आएगा, वो जो आपके कंप्यूटर साइंस वाले टीचर्स हैं उनको जरूर पकड़ना, क्योंकि उनको सबको समझ में इजीली आ जाएगा. सो CS202 कोड इज इम्पॉर्टेंट. Code is important always to write, और हम लिखते भी है. And it is data structures and algorithms. It is core course, theoretical course. If it is a practical one, so laboratory course, something like this, it can be classified. So here somebody, I mean, it is up to you how many course outcomes are to be decided. Normally, what do we do? It has been always seen that the syllabus are unit wise. Unit means the highly correlated components are there in a single unit. It means it is possible for us to design a single course outcome from that unit.
It is that as simple as that. So it depends, but it is not always so. So you have to define the course outcomes. That is, after studying this course, data structures and algorithm, the students in that class should be able to cover all those things as a result. Outcomes. They should be able to understand, they should be able to, write the programs, they should be able to implement and each and everything. The different aspects related to the course. So that we have to write here in terms of CO1, CO2, like this. So normally the teachers ask how many COs are or how many COs should be there. Hello, am I audible, please? Yes, ma'am, you are audible. Okay, okay. Yes, ma'am. Yeah, okay. So something happened. I don't know what was that. So let me. There was a glitch, ma'am. बीच में थोड़े टाइम के लिए हम नहीं सुन पा रहे थे. हाँ, नहीं मैंने फिर बोला भी नहीं क्योंकि. हाँ. नहीं अभी सही हो गया मैम. अभी बस. हाँ, चलिए. So let me present this again. Yes, so let me present this. I suppose I am audible again. Yes, ma'am, you are audible. Okay, good. So basically, see, these are the examples of, program outcomes, then COs and their examples. Basically, I wanted to show you. So this was the first example. This is another example where I am writing data structures laboratory. But again, it is a core course. There are certain courses, if classification is there in your hand, you can write like this also. So again, being the core subject, this library is also that important. So the laboratory courses also must have the COs properly defined. This is what I mean to say here. So then project work, it has become really essential nowadays. To understand the subject, basically, or in a degree, one has to go for the project work. So again, many times it happens that we don't design the course outcomes for that particular program also, not program, project work also. So then curriculum design. See, it is known to you, but still, let me talk about certain things which are very, very important. The program curriculum is to be designed such that the student should demonstrate the essential knowledge, skills, and abilities needed for the professional practice and higher studies. The curriculum should be aligned with the program educational objectives through its direct support from program outcome. The program curriculum should also satisfy the program specific criteria. Curriculum assessment and evaluation are the major tools by which POs are attained. We should look at all of these together. These need to be designed well.
कहने का मतलब हम लोग जो हैं, इसीलिए ये ओबीई के फ्रेमवर्क में मैं जरूर ये बताती हूँ सबको, we can't leave this curriculum aside. Each and every syllabus of, or the contents I should say, of the program is equally important for teaching learning as well as for the other aspects of OBE. So if you look at the curriculum, where the syllabus of all of the subjects which are in the scheme of a particular program, so their COs have been listed properly. Everybody knows. We do it. Now these COs and POs, they have the linkage, because you know that POs and COPO mapping must be there. So there is a linkage. Then as per the program outcome, we try to design the curriculum. What is our aim basically? To float that program. Unless and until why we are going to float that program in our own college, we should understand the reason first. In what manner we are going to run it, it should be well understood. What must be the scheme? Then this question comes into the picture. So scheme, curriculum, and in what manner that has to be taught. So teaching learning process comes to the picture basically. So look, when we talk about the program outcomes, with these program outcomes only, it is possible for us to design the curriculum and in what manner we should proceed for the teaching learning process. It is here. So ultimately these program outcomes, the attainment of this will decide about the program educational objectives, which is therefore the vision. It is highly correlated to the vision of the institution. So this is basically the OBE framework. All these things are connected to each other. But when we look at this, we forget about the question paper setting wala part also. And all of these things are required in question paper setting also. And therefore, as the base, it is compulsory to understand these components of OBE and then proceed further for the assessment strategy. So for POs to assessment, if the mapping is to be done, so in what manner we proceed. So you should identify the competencies for each POs. So we try to find the competencies for each PO. मैं बताने वाली हूँ अभी आपको. Define performance indicators for each identified competency. So I'm going to talk about these things with the examples. So for example, I have, let us say, PO3 as design or development of solutions to complex engineering problems and design system components or processes, and design system components or processes that meet the specified needs with appropriate considerations. ये पूरा मेरा ही PO3 ये बना हुआ है, ये मैंने statement बनाया हुआ है. So looking at this, what kind of competencies are needed to be defined so that all of the aspects which have been covered here, those should be fulfilled. So these are the actions, basically competencies. So what kind of actions I have to cover so that this PO3 will be achieved? So competencies: demonstrate an ability to define a complex open-ended problem in engineering terms. Demonstrate an ability to generate a diverse set of alternative design solutions. Like this, you know, ये हम लोग हमारे जो senior members होते हैं college के, they can sit together in a group and they can very well design these competencies for each and every PO. Each and every PO, because PO may contain so many aspects. So for covering those aspects, you have to, you have to plan for certain activities so that the competencies which will cover all these things at a time after, achieving all these levels. So we say that, yes,
PO may be mapped with CO or something like, or vice versa. So there are certain performance indicators. I said that POs identify competencies for each PO. So यदि PO हमारा बड़ा स्टेटमेंट है तो उसमें एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. Those are nothing but the kind of, the activities which will be performed. Then define performance indicators. So I will come to this point here, performance indicators. So these are nothing but the explicit statements of expectations of the students learning. देखिए ये जो वर्ड है इसी से परफॉर्मेंस किसका, स्टूडेंट्स का. So performance indicators. So this thing is nothing but the statements of the expectations of the students learning. These can act as measuring tools in assessment to understand the extent of attainment of outcomes. They can also be designed to determine the appropriate achievement level or competency of each indicator so that the instructor can target and students can achieve the acceptable level of proficiency. See, I would not like to, explain all these points in general manner, but yes, I am going to take some examples with the help of which it will be really very much easy for you to understand all these things. So if I take an example of competency 2, let us say, it is competency 2 somewhere written as demonstrate an ability to generate a diverse set of alternate design solutions. Where is this competency? Where is this competency written here? This. See, competency, PO3, second wala, demonstrate an ability. So what basically you are going to do? POs will be, what should I say? It will be further classified into small problems. So 1, 2, 3, 4. So as a whole, all these things which have been written here should be covered in well manner. So अभी मैंने क्या लिया? competency 2 लिया है. अब competency 2 यदि ये है demonstrate an ability to generate a diverse set of alternative design solutions. So performance indicator. How really, what will you do to look at the attainment? तो आप टीचर्स को क्या करना पड़ेगा? हमको we have to apply formal idea of generation tools to develop multiple engineering design tools. हम अब ये जो है इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना सिंपल तरीके से बच्चों से हम ये एबिलिटी डेवलप उनकी कर सकते हैं. This is what we have to go further again. So build models, prototypes, algorithms to develop a diverse set of design solutions. है ना, जितना भी हम लोग उनके लेवल का काम जो एक्सपेक्टेड है तो उतने हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम डिसाइड कर सकते हैं. So let me come to the Bloom's taxonomy now. Bloom's taxonomy, ये तो हो गया हमारा OBE फ्रेमवर्क. अब हम आते हैं Bloom's taxonomy पे, because ultimately we are interested finally. अभी मैंने जो आपको बताया, they were the points which were badly needed to understand the question paper setting according and the another part is the Bloom's taxonomy also. So आपको ये 2 दिन पढ़ाया गया है, मैंने देखा है. There are certain levels as per the Bloom's taxonomy ranging from 1 to 6, and the descriptors are named as remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. So there are certain levels of attainment. It means the students, what the students must, what should be the learning outcomes at each level. So level of attainment. So recalling, that is, simply memorization. So recalling from memory of the previously learned material, remembering. Understanding, explaining ideas or concepts. देखिए लेवल बढ़ता जा रहा है, ये नीचे जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है. So understanding हो गया, applying, using the information in another familiar situation.
analyzing, breaking information into the part to explore understanding and relationships. So these are all standard ones. Evaluating. The meaning of this, I mean, the attainment is expected as justifying a decision or course of action. Creating, it is the highest level. Creating, that is generating new ideas, products, or new ways of viewing things. So basically, there is a set of levels which are really very much important while setting up the question paper also. And these levels are directly showing these descriptor and their level of attainments. But I would like to talk about certain things in general, that when we say remembering, so the meaning of actual remembering is to retrieve relevant knowledge from long-term memory. History, ताजमहल किसने बनाया था, यदि ऐसा क्वेश्चन है, सो इट विल रिक्वायर ओनली रिमेम्बरिंग वाला लेवल, कि आपको यदि याद हो, वो ईयर याद हो तो ठीक है. सो लॉन्ग टर्म मेमोरी, हिस्टोरिकल जो डेटा है उसको हमें सिर्फ मेमोराइज करना पड़ता है. सो रिमेम्बरिंग is memorization only. It is that level. So it is the lowest level in revised Bloom's taxonomy. Understanding. So it is defined as constructing the meaning of instructional messages, including oral, written and graphic communication. Graphic communication की यदि हम बात करें तो अभी सिंपल बात है कि अंडरस्टैंडिंग, यदि मैं आपके साथ कुछ मेरा नॉलेज शेयर कर रही हूं तो निश्चित ही मैं आपको दोनों तरीके से आपको मैं शेयर कर रही हूँ. मैं ओरल तरीके से भी आपको बता रही हूँ और ये जो पीपीटी है ये रिटन मैनर में आपके सामने है. और ये जो ग्राफिक्स है यहाँ दिखाया हुआ है इससे भी आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कहीं लेवल्स है. सो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. एंड इफ आई से दैट रिमेम्बरिंग इज द लोएस्ट लेवल, सो इसका मतलब आपको इमीडिएटली दिमाग में आ गया है कि हाईएस्ट लेवल पे यदि क्रिएटिंग है तो ये जरूर इसमें कुछ ना कुछ ज्यादा डेप्थ होनी चाहिए. ये कौन बता रहा है? ग्राफिकल कम्युनिकेशन. ये जो ग्राफिक्स बनाया है इसके कारण पता चल रहा है आपको. सो बेसिकली इट विल बी अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इट इज बियॉन्ड रिमेम्बरिंग और इसलिए नेक्स्ट लेवल इज अंडरस्टैंडिंग. आई थिंक समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yeah. Yes, ma'am. So let me go ahead for the next level, that is applying. What do you mean by applying? So applying, carrying out, apply means carrying out or using a procedure in a given situation. सिंपल बात करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो. तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि इनपुट क्या क्या है इसमें. Unless and until you know what are the inputs and along with this what are the values of what variables inside the formula, you can't apply that. So it is with understanding, it is essential to know about how that formula can be applied, or इसलिए applying. So there may be some system, there may be some model, there may be some procedure, and those procedures or models are that are that are existing freely in nature, let us say. But unless and until you don't know the intricacies of the system, what are the variables inside, then unless and until you are not known about it, it will not be possible for you to simply apply the formula in any case. और इसलिए अंडरस्टैंडिंग के ऊपर का ये लेवल आ गया अप्लाई. यदि मैंने बोला है एक फॉर्मूला अप्लाई करो तो उस फॉर्मूले में कौन कौन सी चीजों की वैल्यूज रखनी है आपको, ये जब तक पता नहीं होगा वो फॉर्मूला क्या है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उनका क्या मतलब है, जब तक वो आपको नहीं समझेगा तब तक आप उनकी वैल्यूज उसको अप्लाई करना यानी उनकी वैल्यूज आप रख के और कंप्यूटेशन नहीं कर सकते हो. सो अप्लाइंग. देन नेक्स्ट इज
analyzing. Analyzing is breaking material into its constituent parts and detailing how the parts are related to one another as well as to overall structure or purpose. A system, suppose you are trying to analyze a system, I say analyzing a system. So what is meant by analyzing a system? Analysis means if there is a system, it may have its own components. अब मेरे को समझना पड़ेगा कि वो कंपोनेंट्स का आपस में कैसा कनेक्शन है, इंटरैक्शन हो रहा है उनका, हर कंपोनेंट का, हर सिस्टम के कंपोनेंट का पर्पस क्या है. देखिए अब ये सारा जो है लेवल देखते चलिए तो ओवरऑल यदि पूरे सिस्टम को मुझे समझना होगा तो मुझे एनालाइज करना पड़ेगा पूरी सिस्टम को सामने रख के, उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं यानी उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको मुझे समझना होगा, उनके बीच की इंटरेक्शन को समझना होगा, और बाद में ही हम लोग जो हमारा डेवलपमेंट होता है, स्किल का डेवलपमेंट होता है, तो हम बोलते हैं कि उनकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हुई है. एनालाइज. नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग. Evaluate means making judgment based on the criteria and or standards. For everything, especially in research, अब हम रिसर्च की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास स्टैंडर्ड चीजें होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम्स होती है, स्टैंडर्ड चार्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड टेबल्स होते हैं, ये हम हमेशा देखते हैं. सो जब भी इवैल्यूएशन करना होता है तो वी ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर विद द standard material, standard tables or standard whatever be the tools are available. So we try to compare with those standard tools and go for judgment. That is more important. किसके बेसिस पे करते हैं? स्टैंडर्ड सारे मटेरियल के बेसिस पे. स्टैंडर्ड इवन जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ भी नैक में या एनबीए में भी हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं. हम बोलते हैं what does it mean? There are certain skills, there are certain abilities, and we set up some standards in terms of, let us say, percentage also. And then we try to achieve it. So कहीं ना कहीं इन processes को apply करके we try to achieve it. Or every year we try to raise the bar, basically. And then we evaluate ourselves. What level we have achieved. So this is evaluation. And the last one, which is really very, very tedious, but yes, it is a different kind of world in which the students or teacher they work. So the main thing is whatever be the existing material or literature, so with the help of those things we try to raise our bar at the higher levels, and we think of the new system, novel system, innovative system. And definitely its performance. We should be able to show its performance also. Normally, it is a kind of approach which is followed in research. So, this is create. So, revised Bloom taxonomy. Why it is revised? Because earlier, only these levels were there. From remember to analyze. इसके पहले तो 3 ही हुआ करती थी, फिर बीच में एनालाइज भी आया और अब ये दोनों भी आ गए हैं. देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ रेजिंग द बार एट 2 levels, क्योंकि आजकल हम लोग आजकल एग्जामिनेशन यानी हमारे टीचिंग लर्निंग सिस्टम में मूक्स को भी हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं. सो उसके कारण हम लोगों के पास ये 3 levels भी जो हैं वो ये तीनों एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, काफी सारी नई चीजें भी हम लोग अडैप्ट कर रहे हैं. नाउ द थिंग इज एक्शन वर्ब्स आर एसोसिएटेड विद ईच लेवल. ये आपको बताया गया है 2 दिन में, मैंने देखा है आप लोगों को बताया गया है, कोई बात नहीं, पर मैं सीधे कोशिश करूंगी कि रिमेंबर ये जो लेवल है इसमें द स्किल डिमॉन्स्ट्रेटेड इज एबिलिटी टू रिकॉल of information like facts, conventions, definitions, jargon, technical terms, classifications, categories, and criteria.
So these skills are to be demonstrated in remember, and the words, basically verbs, which are to be used in question paper setting is listed here. List, define, tell, describe, recite, recall, identify, show, label, tabulate, quote, name, who, when, where. So, as I discussed earlier, remember, it is ability to recall methodology and procedures, abstractions, principles, and theories in the field, the things which are already exist at the base level. You have to recall those things simply. So, knowledge of dates, events, places. Maybe the example for this memorization. Mastery of the subject matter. Yes, होना चाहिए, तभी जाके ये सारी चीजें हम लोगों को दिखाई देती है. So the thing is, में कवर कर सकते हैं, है ना. फिर यदि हमें बाकी के लेवल्स का यदि हमें असेसमेंट करना है, तो हमें एक्टिविटीज जो देनी पड़ती है वो ये देनी पड़ती है, जो अभी मैंने पहले बताया, उसी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. सो चलिए हम लोग अब छोटी सी बात करते हैं. मुझे लगता है सीधे मैं आती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, हमारे पास टाइम कम है. पर एक बहुत अच्छी चीज, अब हम क्वेश्चन पेपर सेट करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमें हमारा प्लानिंग जबरदस्त होना चाहिए. So good and reasonable examination paper must consist of various difficulty levels to accommodate the different capabilities of the students. सबसे पहले एक ध्यान रखना है, हम जब क्वेश्चन पेपर को हम बनाने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा एवरेज बच्चा किस लेवल पे है उसको देखकर नहीं करना है, बिकॉज हर क्लास में बिल्कुल नीचे के लेवल से लेवल बात करते हैं हम, तो ग्रास्पिंग लेवल, तो वो हमें बिल्कुल नीचे के लेवल से टॉप लेवल तक बच्चे मिलते हैं. और इसलिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि डिफिकल्टी लेवल्स जो हैं वो सारे हमें अटेंड करने से उसमें अकोमोडेट करने की कोशिश करना है, टू लुक एट द डिफरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स. Bloom's taxonomy framework helps the faculty to set examination papers that are very, very important to note again here, that are well balanced, testing the different cognitive skills without a tilt towards a tough or easy paper preparation. यानी वेल बैलेंस्ड का ही मतलब है कि आपको जितने भी हमारे लेवल्स हम लोग अटेंड करना, हम एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए वेल बैलेंस्ड पेपर बनाना है. तो क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चंस है वो भी उनकी डिफिकल्टी लेवल्स जो हैं उनको भी अब हमें याद देखना है. यदि हम एक क्वेश्चन पेपर में बड़े सिंपल सीधे सीधे हम क्वेश्चंस दे देते हैं जिसमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिमेम्बरिंग की जरूरत है, और बच्चों को मिल गए 95% के ऊपर मार्क्स सबको, और हम बोलेंगे कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत ज्यादा
स्टैंडर्ड हमारा उसमें हमने अचीव कर लिया, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड because you have not fulfilled the attributes which should be there, which should be seen there in the examination papers. So well balanced examination paper, अच्छा हाँ it means it should be able to cover the difficulty levels, various difficulty levels. ये देखो तो It is recommended that institution or university level, upper limit need to be arrived for lower order skills. For example, कितना वेटेज होना चाहिए किस चीज का, ये हमें ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल, नो मोर देन 40% वेटेज फॉर नॉलेज ओरिएंटेड क्वेश्चंस. आप जो हायर लेवल के हम डिफिकल्टी लेवल्स की बात कर रहे हैं, उसको यदि आपने 40% से ज्यादा वेटेज दे दिया, मीन्स क्वेश्चन पेपर यदि आपके 10 क्वेश्चन है और आपने 4 से ज्यादा क्वेश्चंस उसमें दे दिए उस लेवल के, तो वो भी ठीक नहीं है. एक अपर लिमिट हमने सेट करनी है कि डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस है वो इतने % होने चाहिए, और बाकी हम हमारे जो इजी क्वेश्चंस है उसके वो भी बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए. मैं बता रही हूँ, आगे बता रही हूँ मैं आपको. जो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द नेचर ऑफ ईच कोर्स इज डिफरेंट. सभी कोर्स एक जैसे नहीं होते हैं. कोर्स मीन्स सब्जेक्ट. कोई जो सब्जेक्ट है वो जिसमें थ्योरी जो है इट इज नॉट डोमिनेंट एज कंपेयर टू इट्स प्रैक्टिकल. तो पहले हमारे कोर्स का नेचर कैसा है उसको भी देखना जरूरी है. And as per the orientation of the course, you should be able to decide the weightage of different cognitive levels. And therefore, the question papers may vary, or the cognitive levels in the question paper may vary course to course. ये आपको समझ में आना चाहिए. So there are sample questions for Bloom's taxonomy levels. मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप लोग अपना एक ग्रुप बनाए, आखिरी में मैं बताऊंगी, और इस पर काम करें और IQAC को सबमिट करें अपना काम. मैं आज जो भी दूंगी, क्योंकि यदि हम लोग वर्कशॉप बोले तो वर्कशॉप में सिर्फ लेक्चर नहीं होता है, हम लोग कुछ काम भी करते हैं. पर चूंकि इट इज ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में मैं कुछ बताऊं और आप काम करेंगे और उस लेवल तक पहुंचेंगे जो मुझे खत्म करना है, वो शायद नहीं हो पाता इस समय में. और इसलिए मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने थे वो बताए हैं, और मैं अब आगे हमारा जो मेन उद्देश्य है उसकी तरफ बढ़ रही हूँ. दैट इज सैंपल क्वेश्चंस फॉर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लेवल्स. तो रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट लेवल. तो मैंने कुछ यहाँ अलग अलग डोमेन्स में से क्वेश्चंस निकाल के आपके सामने रखे. And I have made use of the verbs which have been listed earlier in my earlier slides. So, sample questions. State owns law. It is a standard law. So, इसको मगअप करके बच्चे लिख सकते हैं with remembrance, memorization. List the physical and chemical properties of silicon. It is listed. लिस्ट की हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है किताबों में, उसको याद करके लिखना है. Who invented aircraft? हिस्टोरिकल हो गया है, नाम देना है, उसको याद होना चाहिए वो. सो मेमोराइजेशन का ये मामला है. व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट? सो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है. वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिचुएटेड? सो ये इस टाइप के जो है ये सिर्फ मेमोराइजेशन वाले, इसमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की कोई जरूरत नहीं है. सो दिस इज द फर्स्ट लेवल. सो सैंपल क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन लिस्टेड आर दिस. ठीक है, ये समझ में आ रहा है शिवा? Am I? Yes. Yes, ma'am. Yes, sir. So these are very simple questions, और इसलिए जिसमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, जिसमें हिस्ट्री से आ रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड लॉज, वर्ब्स, इन वर्ब्स का हम लोग यूज करते हैं. देन अंडरस्टैंड इस लेवल के यदि क्वेश्चंस देखें, सो इट नीड्स मेमोराइजेशन आल्सो एंड slight understanding also. Explain the importance of sustainability.
यदि बच्चे को सस्टेनेबिलिटी का मतलब पता है, उसके मेमोरी में है, तो उसके बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है. उसने मगअप करके लिख दी डेफिनेशन, बट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस. तो जब तक आपको वाकई में सस्टेनेबिलिटी का मतलब नहीं पता है, तो शायद इंपॉर्टेंस लिखना कितना मगअप करेगा वो. आपने और इसके साथ एक जोड़ दिया कि सस्टेनेबिलिटी इन एजुकेशन सिस्टम, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना. कितना मगअप करके लिखेगा वो. यदि अंडरस्टैंडिंग हो तो शायद वो ठीक से यहाँ अटेम्प्ट कर पाएगा एज डिजायर्ड. डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ नेट बैंकिंग. So explain, describe, discuss, differentiate, summarize. All these verbs are listed in the level of understanding in Bloom's taxonomy. And I have made use of these things. Now, मैंने आपको बोला था कि understanding और apply में आप describe use कर सकते हो. So describe the procedure of net banking. If ये यदि मुझे देना है प्रश्न, ये एमकॉम लेवल पर भी हो सकता है, ये बीकॉम लेवल पर भी हो सकता है. सो आप उनसे क्या अपेक्षाएं कर रही है. सो इट इज वेरी मच ट्रू दैट इट इज ऑब्वियस दैट बीए लेवल जो प्रोसीजर वो लिखेगा वो लिमिटेड होगी, और इसलिए डिस्क्राइब का उस लेवल पे मतलब वही होगा कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन वो बताएगा. बट इफ द सेम क्वेश्चन इज देयर एट एमकॉम लेवल, तो कई सारी और डिटेल में वो उसको बता सकता है विद वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स. तो ये डिस्क्राइब एक वर्ड यूज करा है, पर किस लेवल पर ये पूछा जा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा. सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम एंड मॉडल, समराइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोड कंडक्ट. सो दिस इज I have made use of these verbs at this particular understand level. Apply. आपको मैंने बताया था apply. Normally हम लोग कुछ formally apply करने के लिए कुछ जो mathematical models होते हैं, या हम algorithms की बात करते हैं, या system के behavior की बात करते हैं, उससे related questions को यदि हमें question papers में डालना है, तो these are the sample questions. Determine the region under the curve y equal to fx under x lying between 0 and 1. So ये फॉर्मूला अप्लाई जरूर करना है, बट he must have the understanding कि x की वैल्यू 0 से 1 तक ही हो सकती है, और fx जो भी दिया होगा उसमें x की हर वैल्यू को रख के y की वैल्यू निकालना है, और उसके अंदर जैसा भी कर्व ड्रॉ होगा उसके अंदर का जो है वो हमें लेटर से एरिया निकालना है. डिटरमिन एरिया अंडर द रीजन. मैंने यहाँ एरिया लिखना भूल गई हूँ. डिटरमिन द एरिया अंडर द एरिया रीजन बेसिकली. सो ये वाला है. तो ये कहीं ना कहीं इसके बारे में ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है क्या, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. इट इज एक्सपेक्टेड. सो जैसे जैसे हायर लेवल पर जा रहे हैं उसके निचले लेवल की पूरा उसका नॉलेज होना चाहिए बच्चों को. ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है. Show that R lies between 0 and 1. R is the coefficient of correlation. तो ये यदि क्वेश्चन है तो उसको R के बारे में पता होना चाहिए. What is this R? How it is derived and how really it is possible for me to show or to prove that it lies between 0 and 1. So apply. Then calculate compound interest given some input variables. So formula तो पता है, पर इनकी वैल्यूज कहाँ से आ रही है और वो बराबर है कि नहीं, क्वेश्चन से हम बराबर ले पा रहे हैं कि नहीं, उतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी जाके वो कैलकुलेट कर सकता है बच्चा. राइट एन एल्गोरिथम टू इंप्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग क्यू. एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस. सो ये सब अप्लाई करने वाली बात हो गई है. सैंपल क्वेश्चंस जो है इट इज अप्लाई. देन एनालाइज में क्लासिफाई, इलस्ट्रेट, एनालाइज, इन्फर अबाउट, कैटेगराइज, ये सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो अब ये फिल इन द ब्लैंक में आपके लिए छोड़ने वाली हूँ, और मैं आप लोगों को भी समय देने वाली हूँ जो आप लोग मेरे को खुद अपने अपने डोमेन का बना के देंगे. हाँ, सो बेसिकली ये तीनों लेवल्स पे आगे के ये आप लोग मुझे बना के देंगे, पर उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, तो ही आप कर पाएंगे.
So higher order cognitive skills which are evaluate and create, they are really difficult to assess in limited time of examination. So these need to be assessed in variety of students' work, such as open-ended problem solving exercises. मैं बता चुकी हूँ प्रोजेक्ट्स वगैरह उनके लिए, या उनको हमने कोई टिपिकल रिसर्च ओरिएंटेड प्रॉब्लम दे दिया और उससे, जैसे मैंने बोला ब्राइट स्टूडेंट्स को असेस करना है हमें, तो ब्राइट स्टूडेंट्स को इस टाइप से हम लोग असेस कर सकते हैं कुछ ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स दे के. आइए किसी एक मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेटिंग देखते हैं. सबसे पहले कोर्स का नाम हमें देना चाहिए, और यदि कोड है तो कोड भी देना चाहिए अलोंग विद द मैक्सिमम मार्क्स एंड द ड्यूरेशन. ये हमें देना चाहिए, और इसलिए हम लोग सारे पेपर्स में ऊपर ये लिखते हैं. इट इज मैंडेटरी. नाउ अभी तक मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग इतना ही करते हैं. अब इसके साथ में हमें कई सारी चीजों का ध्यान में रखना है. सो इसमें हमको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के लेवल्स जो हमने 1 से 6 पढ़े हैं, तो क्वेश्चन पेपर्स में ये लेवल्स भी आएंगे. अब जो है ये इतनी सारी चीजें बताई है, तो अब हमें क्वेश्चन पेपर में इन लेवल्स का भी उपयोग करना है. COs, they are very important because this C stands for course, and course is this one, this course. So it is the course outcomes. It means this course. For this course, I may have listed, let us say, 4 COs ranging from CO1 to CO4. So those are to be there in our mind while, setting up the question paper for this particular course. Then what POs are dominant with this course? This is what we have to check with the help of CO-PO mapping. Then PIs, performance indicators. I said that for each PO, there will be performance indicator. मैं बताने वाली हूँ अभी आपको, ये नीचे लिखा है. So if I have, let us say, PO1 as engineering knowledge for this particular course, ये जो कोर्स है इसका ये कोर्स जो है जिस भी कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, तो वो प्रोग्राम का PO1 इंजीनियरिंग नॉलेज है. ये कहीं ना कहीं हम CO-PO मैपिंग से हमको मिल रहा है. PO1 में ले रही हूँ एज एन एग्जाम्पल. इस PO1 में कुछ इंडिकेटर्स हमने हमने डिजाइन किए हुए हैं, and those PIs I have listed in the next slide as this. So PO1 is engineering knowledge, और इस PO1 का हमारे उस CO से हाई कोरिलेशन है. इसलिए मैं ये जो है ये इस कोर्स का पेपर सेट कर रही हूँ, इस कोर्स का पेपर सेट करने जा रही हूँ, तो कौन सा PO डोमिनेंट है CO-PO मैट्रिक्स से मैं देखूंगी. सो PO1, यदि PO1 है तो मैंने कहीं ना कहीं लिस्टिंग करके रखी है इसकी इंडिकेटर से. परफॉर्मेंस इंडिकेटर कोड या परफॉर्मेंस इंडिकेटर इन टर्म्स ऑफ एक्शंस, वो मैंने लिख के रखी है. वो चीजें क्या होती है, लेट अस लुक एट इट. सो PO1 इज इंजीनियरिंग नॉलेज, जिसका स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है. द competencies PO1, PO2, the competencies which are not, this is PO1, but the competencies within this, यानी ये जो हमारा स्टेटमेंट है मैंने आपको बताया था, ये ओवरऑल इसको यदि हमें अटेंड करना है बेसिकली, तो मैंने कुछ competencies में इसको तोड़ दिया. I have broken this whole statement into 4 so that all of the 4, when I look at, it will be the whole will be, represented by these 4 actions. So competencies, demonstrate competence in mathematical modeling. देखो आपको दिख रहा है knowledge of mathematics, दिखता है हमको. Then आगे लिखा है science, demonstrate competence in basic sciences. बाद में लिखा है इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स, demonstrate competence in इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स. अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है उनको हमने कंपिटेंसीज में तोड़ दिया है. और जब सभी एक साथ देखेंगे और उनके इंडिकेटर्स, अब ये डिमॉन्स्ट्रेट कंपिटेंसीज इन मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो हमें इसको अचीव करने के लिए इसके इंडिकेटर्स क्या क्या होंगे. टीचिंग लर्निंग में
तो apply mathematical techniques such as calculus, linear algebra and statistics to solve problems. तो ये सारी चीजें हमको देखना है हमारे सिलेबस में कि हम इसको कवर कर रहे हैं कि नहीं इस कॉम्पिटेंसी को अचीव करने के लिए. Then this one, like this, we list out all the indicators for all competencies which have been listed for PO1. And अभी मैंने यहाँ क्या किया है कि PI 1.4.1 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं जो मॉडल क्वेश्चन पेपर की बात कर रही हूँ उसमें इसको यूज किया है और इसलिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी 1.4.1 ये 1.4 है और इसका PI इंडिकेटर जो है ये इंडिकेटर ये है 1.4.1. सो अप्लाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंसेप्ट टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स. ये स्पेसिफिक है ऐसा. सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग विद दिस इज मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 मेरे सिलेबस के हिसाब से चल रही हूं मैं. सो मेरे कोर्स का टाइटल था प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्वेश्चन नंबर 1 मैं 2 पार्ट्स में तोड़ रही हूँ, A and B. What is the question? Explain the steps involved in solving a problem using computer. How many marks are there? 8 marks are there. It is associated with which course outcome? CO1. What is the Bloom's taxonomy level? It is L2, second level. Understand. ये जो क्वेश्चन है ये L2 सेकंड लेवल का है and second level is everybody knows, understand. Then with what PO it is associated, mapped, so it is first PO1. So CO1 mapped with PO1. So what is PI? That is performance indicator 1.4.1. Then 1B, second part is write an algorithm to find this. अब एल्गोरिथम ये कहीं दिया नहीं है, मान के चल रहे हैं और ये हाँ बच्चों से हम अपेक्षा कर रहे हैं. 12 नंबर का है, मार्क से भी पता चल रहा है हमको, बट ये जो है ये CO2 से रिलेटेड है. निश्चित ही यदि हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं थोड़ा सा हायर लेवल में हो सकता है. सो L3, everybody knows what is L3. Again, CO2 is mapped with PO1. PI code is 1.4.1. ये सब हम देख रहे हैं. Being the designers, we are trying to map all those things. ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का. क्वेश्चन नंबर 2 ये अलग अलग नहीं होते पर फॉर टीचिंग पर्पज मैंने आपको बताना है मुझे, इसलिए मैंने अलग अलग दिए हैं. ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 20 मार्क्स का है, दिख रहा है 8 और 12 20 मार्क्स का है. और उसमें हमारे CO1 और CO2 कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके डिफिकल्टी लेवल्स क्या है, कॉग्निटिव लेवल्स क्या है, ये हमको पता चल गया. व्हाट इज द मैपिंग COPO मैट्रिक्स का यूज करके वी कैन राइट these two also. And PI code is the action, sort of action basically, which I have already talked about. Then second question, इसमें भी हमने ऐसे ही किया. How many marks are there? What CO is associated with this question? What is the difficulty level? Then PI code, something like this. So ये मैंने second question भी वैसे किया. It is CO3 basically. ये इससे आ रहा है. CO3 is mapped with this question. L3 higher level का है. So like this मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का भी पूरे डिटेल्स जो है कितने मार्क्स का है, COs किन COs से एसोसिएटेड है, लेवल क्या है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और मेरा टोटल जो है वो 100 नंबर का था, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आपको लिखना जरूरी है. मैक्सिमम मार्क्स इज 100. 3 घंटे में करना है और इसलिए 1, 2, 3, 4 और 5वां क्वेश्चन है उसमें 3 हमारी पार्ट्स हैं और 4, 6 और 10 मार्क्स में उसको हमने तोड़ दिया है. लुक एट देयर डिफिकल्टी लेवल्स. सो L2, L4 and L3.
कहीं ना कहीं यदि मैं बोलती हूँ आइडेंटिफाई द बग इन द फॉलोइंग फंक्शन, थोड़ा ये दिमागी काम ज्यादा होगा इसमें, और इसलिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी या हमारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का लेवल भी यहाँ 4 दिख रहा है आपको. So this is the way we do it, but really what do we do with it? Actually ये तो सब हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, बट इससे होता क्या है? तो अटेनमेंट. So what kind of attainment we see here? If you look at the Bloom's level wise marks distribution in the question paper, हमने लेवल 1 यूज नहीं कराए, लेवल 5 और लेवल 6 यूज नहीं कराए. You have seen, and therefore the levels which are used in this paper is level 2, level 3 and level 4. Level 2 is having 36 marks. आप देखिए इसका जोड़ कर दीजिए. ये लेवल 2 8 मार्क्स. आप देखिए लेवल 2 8 मार्क्स, 8 और 8 16. ओके, लेवल 2 8 मार्क्स 24, then it is 36 level 2. I think L2 36 and 4. Is it true? बराबर है? ये 36 लिखा है. I may be wrong in total. So 36. 32. जो भी होगा प्लीज आप देख लीजिए, जैसा भी होगा, हो सकता है मैंने यहाँ गलत लिखा हूं, बट यदि L2 है, L2 का टोटल कितना है वो आप लिखिए. L3 का लेवल लिखिए, L4 का लेवल लिखिए. Why do we write like this? Because it forms it basically states the level of the question paper. देखिए लेवल 1 यूज नहीं किया है, लेवल 1 यूज नहीं करा है. इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए. कहीं ना कहीं हम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं. हम लोग बहुत बार जो है फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, ट्रू और फॉल्स देते हैं. अब वो जमाना गया. हमको थोड़ा अपना लेवल ऊपर करना है. हम यदि हमारे जो टेस्ट है, जो इंटरनल्स है, उसमें कभी देते हैं थोड़े डिफिकल्टी लेवल को मान के, तो वो सब चल जाता है. पर हमारे जो एंड सेम एग्जाम के पेपर से उसमें लेवल मेंटेन करके चलना है, क्योंकि अटेनमेंट जो है, सब अटेनमेंट्स इसी से आने वाले. जैसे मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होना चाहिए. बहुत ज्यादा, यदि मैं ग्रेजुएट लेवल की बात कर रही हूँ, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देने नहीं चाहिए. तो बेसिकली इट विल बी नथिंग बट द परसेंटेज बता रहा है कि लेवल 2 के कितने परसेंट वाले, कितने परसेंट, या मार्क्स की भी बात करते हैं. टोटल मार्क्स कितने लेवल 2 के हैं? टोटल 40. तो अभी 100 से ही है, तो परसेंटेज भी बात हम कर सकते, परसेंटेज से भी बोल सकते हैं. अब आइए कोर्स आउटकम वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें. हमारे हर प्रोग्राम में हम कोर्स आउटकम्स लिखते हैं. सो COs, CO1, CO2, CO3, CO4, CO5. यहाँ जो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है, हमने ये बताया था कि आपको यू शुड बी एबल टू नो अबाउट द कोर्स आउटकम्स रिलेटेड टू दिस. सो इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए 5 कोर्स आउटकम्स बनाए गए हैं, और उन 5 को कैसे क्वेश्चन पेपर में मैनेज किया है, दिस इज व्हाट यू हैव सीन. COs ये दिख रहे हैं आपको. सो आपने COs भी जो लिए हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. CO1 यूनिट 1 यदि मेरी है सपोज, तो ये 8 मार्क्स का मैंने क्वेश्चन पेपर में CO1 से एसोसिएटेड है. CO2 से 20 मार्क्स दिए. हो सकता है CO3 में कुछ ऐसे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, और CO3 मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट था कि मैंने उसके मार्क्स भी ज्यादा रखे हैं. CO3, then CO4, CO5. सो ये भी हमारे पास यदि कोर्स वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये हम लोग ये बताते हैं कि हमारा एक बैलेंस्ड पेपर है, ये बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर है, और इससे अटेनमेंट भी आसान हो जाता है. यदि इस लेवल के हम इस टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं, तो लेवल्स भी आसान हो जाता है. सो मेरा जो मकसद आज का था वो ये था कि कोर्स, हमारे सब्जेक्ट्स जो है
उनके यदि हमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को इंक्लूड करके क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं तो वो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के लेवल्स और उससे एसोसिएटेड वर्ड्स, और उन एसोसिएटेड वर्ड्स में डेप्थ होती है, और जितनी हमारी डेप्थ की एक्सपेक्टेशन है उतने मार्क्स भी एसोसिएट वैसे होने चाहिए। और इसलिए ये जो चीज है ये 8, 20, 54, 12, 6, ये कहीं ना कहीं उस डेप्थ के हिसाब से आपने इन क्वेश्चंस को अकोमोडेट किया है उस क्वेश्चन पेपर में, ये समझ में आता है। एंड ऑल दोज थिंग्स आर रियली वेरी वेल और वेरी मच हेल्पफुल टू कंप्यूट द अटेनमेंट लेवल्स ऑल्सो। तो इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपको यदि ये पीपीटी चाहिए तो ये पीपीटी में भी भेज दूंगी शिवा मैडम को, और यू कैन मेक यूज ऑफ दिस। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन माइंड सो प्लीज आप मुझे बताएं तो मैं आई कैन रिप्लाई दोज questions also. Are there any questions? Ma'am, there is a question in the chat box by Dr. Smita. Is it necessary to mention questions unit wise in the final examination, or should it be a certain number of questions of various levels as per Bloom's taxonomy without mentioning any units? See, units are there for our purpose. है ना, ये तो यूनिट्स हम लोगों ने बनाई हुई है, पर बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्वेश्चन पेपर में यूनिट्स नहीं देते हैं हम, नॉर्मली देना भी नहीं चाहिए। बट यूनिट्स नहीं दे रहे ना, यूनिट्स नहीं दे रहे, कहाँ दे रहे हैं हम लोग, दे नहीं रहे, ये तो है ना। Yes, मैम यूनिट्स नहीं दे रहे, but in our case no, we are following the system. Say for example there are 10 questions, section A and section B. Section A deals with short answer questions and section B deals with long answer question. So question number 1 it will be obviously from unit 1 with an internal choice. Section 2 will be from unit 2. So I think that's a scheme which is prescribed by our parent university. That's why we have. But yes, the thing is, you always write in terms of instruction at the top of the paper. You write in terms of instructions note लिखते हैं ना आप लोग ऊपर. Obviously, मैम. But उसमें questions में देने की जरूरत नहीं है. यूनिट तो मेंशन नहीं हो रहा है मैम. यूनिट करना भी नहीं चाहिए. मैम. करना भी नहीं चाहिए. Yes. Anything else? Participants can kindly unmute yourself and ask the questions. See, we have a very experienced resource person, and the session was awesome, madam. We got many information. सारी चीजें good if it is so, because थोड़े से समय में कई सारी चीजें करना it is really difficult. तो कोई बात नहीं, पर अभी हम एक छोटा सा आपको असाइनमेंट देंगे, एंड आपकी IQAC जो है यदि उस पर काम करेगी तो बहुत अच्छा होगा, मुझे लगता है. Sure, ma'am. We'll try our level best. Because this workshop is incomplete unless and until you do your own work by understanding this. Yes, ma'am. Ma'am, थोड़ा और doubt है, लेकिन that would be in detail. I'll be contacting you in person so that we'll get the guidance. No problems. Ma'am, excuse me, ma'am. There is my one question more. Yeah. Ma'am, this PO and CO, if we are just mentioning in the question paper, you don't think the students are going to be confused with these things? Sir, NBA की या AICTE की या UGC की अब रिक्वायरमेंट है कि बच्चों को OBE की हर चीज समझ में आनी चाहिए. So it means we need to first just teach everything what we have learned to first student, and then set the question paper accordingly. The thing is, students should be known about the key components of OBE. Simple बात है. बाकी आप कैसे क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हो, इट इज नॉट मैटर, है ना. पर उनको यदि आप CO लिखते हैं, PO लिखते हैं, सपोज, है ना, कभी लिखते हैं आप, तो उनको ये समझ में आएगा दिस इज द लेवल. You have to understand. क्वेश्चन पेपर में हमें क्या क्या चीजें दिखाना है मैम, ये पूछ रहा हूँ. PO CO क्वेश्चन पेपर में हम लोग नॉर्मली लेवल लिखते हैं,
लेवल लिखते हैं, CO and PO, COPO लिखते हैं, जो क्वेश्चन पेपर देते हैं बच्चों को देते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें नहीं भी लिखी। और आपने यदि समझने के लिए कि डिफिकल्टी लेवल समझने के लिए यदि आपने L1, L2, L3 भी लिखा तो चलता है। AICTE ने मैंडेटरी कर दिया है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के लेवल्स क्वेश्चन पेपर में लिखना है ना। पर हमारे पर्पस के लिए नहीं, अटेंडमेंट के लिए। अटेंडमेंट किसका काम है? अटेंडमेंट देखना किसका काम है? टीचर्स का। इट इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एग्जामिनेशन वाले भी इसको देखेंगे, तो हमारे लिए हमारी जो कॉपी होगी क्वेश्चन पेपर की, उसमें ये सारे डिटेल्स लिखने चाहिए। सो इट विल बी अ बून फॉर अस फॉर कंप्यूटिंग द अटेंडमेंट लेवल बेसिकली। Thank you. ठीक है, या एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? यस, any more question? Okay, madam. So, madam, there is one. So, okay, it's already answered. So, in question paper which is given to students, CO, PO लिखना जरूरी नहीं है, but the question paper or the question bank or whatever the collection of questions we have, we should know that which question is in which CO and which PO. Yes, very true. It will help you for the attainment purpose basically. Okay. Yeah. Ma'am, I just want to update that in our question paper, we recently started writing only the course outcomes. So course outcomes are mentioned at the top of the question paper. These are the course outcomes. And we have just started this practice. I think this is adopted from some other institution. So we wanted to check, like, I don't think that question outcomes, the course outcomes are to be written. See, it is the responsibility of a teacher when he or she enters in the first class for teaching a particular course. It is his or her responsibility to talk about all these outcomes. After completion of this course, what you are supposed to gain. Right, ma'am. बस ये क्वेश्चन पेपर से नहीं होना चाहिए। ये नहीं काहे के लिए हम लोग लिखे। Okay, ma'am. Because when we prepare the question bank and submit it to the examination, आपके इन-हाउस इसके लिए कर सकते हैं, काम के लिए कर सकते हैं, बट क्वेश्चन कोर्स की आउटलाइन में लिख सकते हैं, राइट? सिलेबस के पहले कि कोर्स का आउटकम क्या है, सर जहां लिखना है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पेपर में जरूरी नहीं है। क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना चाहिए। किसको बता रहे हैं आप? भाई वो तो एंड है ना, वो सब खत्म हो रहा है, उसके बाद तो बच्चा जब तक उसको एटिकेटी आती है तो ही वो अपीयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो तो एंड पॉइंट है उस बच्चे के लिए, हम क्यों लिखेंगे? हम तो असेस करेंगे ना, डायरेक्ट हम असेस करेंगे बच्चे को क्या करना है, क्या क्या है, क्या करना है। यस, let ma'am talk. या एनी क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? Ma'am, I think there are no further questions in the chat box, and those who had queries, I think they have already posted the question. Okay. So thank you so very much, ma'am, because I know that you're very busy, extremely busy, I must say, but out of the busy schedule, you find time to speak about all these intricacies of outcome-based education. Thank you very much on behalf of the entire BSS family. And as Dr. Shumaila mentioned in the beginning, you are part of the family. And let me also say that BSS IQAC, I remember in 2017-18 AAA, at the time of academic and administrative audit, the suggestions which you have given helped us a lot while preparing the SSR, and which also helped us to improve the quality in very many areas. So, ma'am, thank you very much. We will be contacting you in person because we are in an infancy stage when it comes to outcome-based education. So that I have to openly confess. We are learning. We have built something, but then we have to build on that, and in a more robust way and in a very effective manner. So people like you would be definitely helpful for us in this journey. And once again, thank you for the session, and looking forward to have a very long association with you, ma'am. Thank you so much. This will be complete and fruitful if you apply all those things in various departments. So try to implement this strategy in department. So you can form a group and you can proceed for that.
एंड देन सब बना के, और यदि मुझे भेजती हो तो मैं जरूर उसको देख के आई विल कमेंट अपॉन ऑल दोस थिंग्स. So Yeah, that sure. will be the complete task. Sure. I understand Yeah. from the part of IQAC. अब मुझे थोड़ा और काम करना है मैम, जो एक्सिस्टिंग है उसमें और भी एड ऑन करके मैं आपके डेफिनेटली सजेशन लूंगी. काइंडली हेल्प अस आउट. Yeah. Thank you मैम. Thank you. Thanks a lot, all of you. Yes, to listening me patiently. Thank you. Yeah, yes, ma'am.